This is problem number 1. Concept looks like this. A ray of light entering from this point and reflect here. This angle is 45 degree and this angle will be 30 degree. Question is, find critical angle for this. When angle of incidence and angle of reflection is given, आपको पूछा गया है कि what will be the critical angle for this combination. अब देखिए सिचुएशन ऐसी है, पहले हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे sin I upon sin R, sin 45 upon sin 30 degree. Sin 45 is 1 by root 2. Sin 30 becomes 1 upon 2. सॉल्व करने के बाद में हमारे पास आ जाएगा रूट 2. तो आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे पहले निकाल दिया. इस मीडिया का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है रूट 2. क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशन है म्यू मस्ट बी इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन आईसी. हमें निकालना है साइन आईसी. इट शुड बी 1 बाई म्यू. इसका मतलब 1 by root 2. And you can clearly see that IC is coming out to be 45 degree. This is the first concept that अगर हमें ये दो एंगल दे रखे हैं किसी मीडिया पे, क्रिटिकल एंगल निकालना है, आप ये यूज कर सकते हैं to calculate what will be the critical angle of this combination. IC must be equals to 45 degree. Concept number 1. अब चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 2 पर. In the second problem, आपको डायरेक्टली गिवन हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज रूट 3. पूछा जाए फाइंड क्रिटिकल एंगल. ऐसी सिचुएशन में हमें हमेशा याद रखना है कि क्रिटिकल एंगल सिर्फ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वाले फिनोमेना में ही होता है. सो साइन आईसी मस्ट बी इक्वल्स टू 1 अपॉन म्यू. इट मस्ट बी 1 अपॉन रूट 3. सो आईसी को आप लिखने का तरीका ध्यान रखिएगा. या तो आप ऐसे लिखें साइन इनवर्स 1 बाई रूट 3, और अगर कहीं साइन टेबल वगैरह अगर आपको अवेलेबल हो तो उस सिचुएशन के अंदर आप लिख सकते हैं कि IC की वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी 35.3 डिग्री. जरूरी ये नहीं है, अगर आपने यहां तक आंसर लिख दिया तो भी यू विल गेट फुल मार्क्स फॉर दिस. Number 3rd concept is if critical angle is 45 degree, find speed of light in that medium. इस सिचुएशन को अगर आपको फेस करना है, म्यू इज 1 अपॉन साइन आईसी and that must be equals to C by V. So if you are interested in V, it becomes C sin IC 3 into 10 raised to power 8. IC की वैल्यू 45. One upon root 2. Final answer is 3 upon root 2 into 10 raised to power 8 meter per second. If you have given critical angle and you want to find out velocity of light, you can calculate it in this manner.
Number fourth is वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है हमारे पास 1.33। हमें निकालना है डायरेक्शन इन विच फिश अंडर वाटर सीज द सेटिंग सन। इस सिचुएशन को देखिएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। फिश इज हियर because this will be the denser media. Actually, sun is here only. The actual position of sun is here. But because light is moving from denser to rarer, so it bend away and it will come here on this side. This is the maximum thing. Provided this angle is critical angle. अब अगर ये critical angle है तो ये वाला angle भी जो होगा वो आ जाएगा critical angle। We know the relation mu equals to 1 upon sin IC. Sin IC must be 1 upon mu. इससे IC की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास sin inverse 1 upon 1.33। फिश के लिए सन पहले ही सेट हो चुका होगा, हालांकि एक्चुअल होने में उसको टाइम लगेगा। इस सिचुएशन से अगर मैं इसी को कैलकुलेट करूं साइन इनवर्स 1.33 करके, तो मेरे पास जो एग्जैक्ट वैल्यू आती है इट इज कमिंग आउट टू बी 48.7 डिग्री। सो फ्रॉम हॉरिजॉन्टल कितने एंगल पहले ही सन सेट हो जाएगा, I need to find out if this angle, this must be equals to 90 minus IC, 90 minus 48.7, that becomes 41.3 degree. So sun will set 41.3 degree, पहले ही sun set हो जाएगा उसके लिए। Fish underwater sees the setting sun before 41.3 degree. Number fourth, fish has very close relation with total internal reflection. This is another total internal reflection and free phenomena. Here it is. Fish swimming here only, inside water, at height or at depth h. We want to find out कि ये कितना आउटर वर्ल्ड का एरिया देख पाएगी लाइक दिस। अगर फिश यहां से देखती है, बाय द वे इसको ये एंगल क्रिटिकल एंगल मिल जाता है, तो क्रिटिकल एंगल के बाद का पोर्शन ये नहीं देख पाएगी। इसलिए फिश के लिए जो कॉन बनेगा जिसको वो आउटर वर्ल्ड में देख सकती है, वो यही कॉन बनेगा विद रेडियस आर। दोनों तरफ क्रिटिकल एंगल मिल जाएंगे इसको। आप इस चीज को समझिएगा, फिश जब देखेगी तो उसको क्रिटिकल एंगल मिलेगा, क्रिटिकल एंगल के आगे वाला एरिया वो नहीं देख पाएगी, सिर्फ उसके पीछे वाला ही। सो इट कैन बी ओनली दिस मच ऑफ द एरिया। अगर ये IC है तो दिस एंगल इज आल्सो IC। I can write down tan IC must be equals to perpendicular upon base, so I'll get R upon H, so R must be equals to H tan IC. For critical angle, mu is 1 upon sin IC. So sin IC, it becomes 1 upon mu. एक ट्रायंगल बना है ऐसा, उसमें अगर ये IC हो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस इज साइन, सो साइन IC से ये लिखा जा सकता है, तो बेस जो बनेगा वो बन जाएगा म्यू स्क्वायर माइनस 1। अब इसमें अगर रखूं
So R becomes H, tan IC, perpendicular upon base, 1 upon under root of mu square minus 1. What outer word they'll see? The area pi r square. So that should be pi h square upon mu square minus 1. This much area of outer world fish can view. ये वाला जो एरिया आ रहा है आउटर वर्ल्ड का वो फिश देख पाएगी पाई एच स्क्वायर अपॉन म्यू स्क्वायर माइनस 1. छठा क्वेश्चन देखिएगा. We have given a prism, a regular prism, it means of 30 degree, 60 degree. A ray of light, normal incidence of light, it will come here, and then the grazing incidence will take place. अगर यहां से ये इस तरह से चला जाए, इसको बोला जाता है ग्रेजिंग इंसिडेंस. आप जानते हैं ऐसा तभी होगा जब ये एंगल क्रिटिकल एंगल होगा. अब एंगल को देखते हैं, ये 60, ये 90, so this angle must be equals to 30 degree. And if this angle is 30 degree, clearly critical angle is coming out to be 60 degree again. What will be refractive index of prism? In this situation, you can simply say refractive index के लिए mu is equal to 1 upon sin IC. So the mu must be equals to 1 upon sin 60. Sin 60 is root 3 by 2. So the refractive index of the material becomes 2 by root 3. So for all grazing incidents, the refractive index must be equals to 2 by root 3. Seventh concept is if two medium is there, medium 1 having refractive index mu1, medium 2 having refractive index mu2. कल भी हमने इस चीज को देखा था. Light going from medium 1 to medium 2 अगर लेंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा होगा mu2 अपॉन mu1. और उसके बाद अगर क्रिटिकल एंगल निकालना है तो साइन IC 1 अपॉन म्यू इसे लिया जाएगा. लेकिन अगर उल्टा हो जाए, light going from medium 2 to medium 1, तो म्यू की वैल्यू उल्टी हो जाएगी mu1 अपॉन mu2, और फिर ये जो म्यू आएगा उसके बाद आप क्रिटिकल एंगल निकाल सकते हैं 1 अपॉन म्यू. When you are moving from water to glass, glass upon water, glass to water, water upon glass.
सो जिस मीडियम में जा रहे हैं वो पहले आता है, जिस मीडियम में से जा रहे हैं वो बाद में आता है। पहले म्यू निकाल लो, वंस यू विल गेट म्यू, accordingly you can apply in sin IC and you will immediately get your result. Eighth situation is, this result is really important when it is core and cladding. The refractive index of core 1.5, refractive index of cladding 1.3. Find critical angle. अब आप कोर से क्लैडिंग में जा रहे हैं क्योंकि हमारा पहला कंडीशन TIR का ऑलवेज फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। तो अगर इस सिचुएशन को देखूंगा तो मेरे पास में म्यू जो आएगा इट शुड बी इक्वल्स टू, आप देख सकते हैं आई एम गोइंग फ्रॉम दिस वन एंड देन कमिंग टू दिस वन। Then I'll apply sin IC. So IC की वैल्यू हमारे पास में जो भी वैल्यू आएगी इसको अकॉर्डिंगली वी कैन इक्वेट इट। सो ऑलवेज व्हेन यू विल बी मूविंग फ्रॉम दिस टू दिस, तो ये पहले आएगा ऊपर। Ninth concept is refractive index is inversely proportional to critical angle. So if refractive index is more, less critical angle is required. Two rays are coming. This is with refractive index mu1, this is with refractive index mu2. इनमें से एक बैंड हो रही है, दूसरी सीधी निकल रही है। इसको क्रिटिकल एंगल आसानी से मिल गया, इसको क्रिटिकल एंगल नहीं मिला, मतलब इसको क्रिटिकल एंगल ज्यादा चाहिए था। सो mu2 नीड मोर क्रिटिकल एंगल। अगर मोर क्रिटिकल एंगल होगा तो इसका लेस होना चाहिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो क्लियरली हम कह सकते हैं कि mu2 मस्ट बी लेस देन mu1। All these results are there with the Cauchy, and Cauchy relation says that mu is inversely proportional to lambda, but mu is inversely proportional to 1 upon sin IC also. Clearly lambda is directly proportional to sin IC. जिस लाइट का वेवलेंथ ज्यादा होगा उसके लिए क्रिटिकल एंगल की भी ज्यादा की जरूरत पड़ेगी।
जैसे अगर मैं यही रिजल्ट लाइट की टर्म में दूं, ये रेड है, ये बाय द वे ग्रीन है और ये ब्लू है, इनमें से एक लाइट ऐसी है जिसको क्रिटिकल एंगल नहीं मिला, तो सबसे ज्यादा क्रिटिकल एंगल किसको चाहिए था? जिसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा था। तो रेड लाइट विल गो लाइक दिस, बट ब्लू एंड ग्रीन विल बेंड, more will be critical angle, more will be wavelength of the light. Cauchy's relation, mu is inversely proportional to lambda.